Dear students, in the previous class, we have discussed about a brief account of evolution, in which we have said that इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो एग्जिस्ट हुए थे वो थे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और उनमें से बने हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. Unicellular eukaryotic organisms were then able to give rise to multicellular eukaryotic organisms. फिर हमने देखा था that about 500 million years ago the invertebrates came into existence. Then after about 350 million years ago there were jawless fishes that were present. Then after were the amphibians, and from the amphibians, some of the amphibians means some of the aquatic organisms like lobe fins could come up on the land because they had strong fins and they could again go back into the water. This gave rise to amphibians. From amphibians, laying different types of eggs, that is thick shelled eggs जब lay करने लगे तो that was forming the next group, that is reptiles. So reptiles के बाद हमें already पता है कि birds जो होते हैं they were known as glorified reptiles, क्योंकि reptiles में ही मॉडिफिकेशन से बर्ड्स आते हैं और उसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था आर्कियोप्टेरिक्स. ओके, तो ऐसे ही इवोल्यूशन जो हुआ है उसमें सबसे पहले मैमल्स जो थे दे वर श्रू लाइक ऑर्गेनिजम्स, and then after there were other different types of mammals that came into existence, and then there was continental drift in which some of the land areas separated, so different forms of life originated at different places on the whole earth. तो यहाँ पे हमने ये ब्रीफ अकाउंट में डिस्कस किया था अबाउट द इवोल्यूशन. नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन. अगर ह्यूमंस की बात करें तो जैसे एनिमल्स में काफी चेंजेस आए हुए हैं वैसे ह्यूमंस में भी बहुत से चेंजेस एक के बाद एक देखने को मिले थे. So some of the characteristics which we are going to discuss right now is the first type of man that were existing were prior to ape man. मतलब ape man से भी पहले कौन से humans exist करते थे उन्हें कहा जाता था Dryopithecus and Ramapithecus. So Dryopithecus उनके जो fossils हैं they were discovered in the rocks of Africa and Europe. अफ्रीका और यूरोप में फॉसिल्स मिले थे which shows the ancestry that Dryopithecus existed. The duration they existed was about 20 to 25 million years ago. 20 to 25 million years पहले ये organisms मतलब ये Dryopithecus जो हैं वो exist होते थे. उनके arms और legs दोनों की length same थी. They had the same length of arms and length, and their posture was semi erect, so they were not able to be stand properly. Instead their posture was semi erect. Another thing is that the brain was very large, that is the size of the head was quite huge, and they even had large sized canines. Arboreal मतलब वो ट्री पे कभी भी चढ़ जाते थे and on the trees they had soft fruits, they had vegetables, whatever was available they were eating. कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ एप एंड मैन. ड्रायोपिथिकस जो है वो एप्स और मैन. एप्स में फिर क्या इंक्लूड होता है जैसे कि चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड. तो एप्स और मैन के बीच में कॉमन ही एंसेस्टर्स हैं एंड दैट एंसेस्टर्स आर ड्रायोपिथिकस. फिर आता है रामापिथिकस. तो रामापिथिकस जो ऑर्गेनिजम्स मतलब ह्यूमंस थे दे अपीयर्ड 14 to 15 मिलियन ईयर्स अगो. जैसे ड्रायोपिथिकस वर ऑब्जर्व अबाउट 20 to 25 मिलियन ईयर्स अगो, उतने पुराने फॉसिल्स हैं, जबकि रामापिथिकस के फॉसिल्स जो हैं 14 to 15 मिलियन ईयर्स अगो के फॉसिल्स हमें मिले हैं. They were found in the Shivalik hills of India. मतलब Ramapithecus is a type of humans that were observed in India itself. They walked erect on their hind feet. मतलब legs पे walk करते थे और अब इनका posture थोड़ा erect था instead of a semi-erect posture. They had small canines, but the size of the molars was larger in them, and they ate hard nuts and seeds. So hard nuts and seeds which were available that were consumed by these organisms. So that was Ramapithecus. तो prior to ape man से पहले दो exist हो रहे हैं, that is Dryopithecus and Ramapithecus. Next is ape man. Ape man में सबसे पहले आपको याद रखना है Australopithecus. Australopithecus जो है उनके फॉसिल्स मिले हैं अफ्रीका में.
Australopithecus fossils are found in Australia and Africa, and they had human and ape-like characters. So दोनों ही characters हैं इनमें. Bipedal locomotion means walking with the help of only two legs. इसे कहा जाता है bipedal locomotion. They had an erect posture, so body position was normal. Human teeth, मतलब हमारे जैसे ही teeth हैं उनके पास. Brain capacity was 500 cc. That is 500 was the cranial capacity of these organisms, and they were found in the caves. Caves में रहते थे और चिन नहीं है उनके पास. और फॉर द फर्स्ट टाइम लंबर कर्व, मतलब जो हमारे पास अभी भी है, दैट लंबर कर्व वाज ऑब्जर्व्ड इन देयर वर्टिब्रल कॉलम. So this was something relating to the modern man, that is Homo habilis, Homo erectus से relate होते हुए एक चीज है उनके पास कि उनका जो लंबर कर्व देखने को मिलता है उनके वर्टिब्रल कॉलम में. बट अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. तो आप देख सकते हो कि पहले 20 to 25 मिलियन ईयर्स पहले ड्रायोपिथिकस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. 10-15 मिलियन ईयर्स पहले रामापिथिकस हैव एक्सटिंक्ट. Australopithecus are also extinct, that is about 1.5 million years ago. And from them, they gave rise to the next, that is Homo habilis. और Homo habilis के बाद आते हैं Homo erectus, which is the modern man. इसके अलावा modern man जैसे ही दूसरे भी हैं individuals, they were found at different parts of the earth. Netherland mans and the other are the Cro-Magnon mans. तो हम उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. So the next category in the evolution of man, that is evolution of humans, is Homo habilis. We are talking about the true ape men. So Homo habilis जो है, they were tool makers. That is, they were able to prepare different types of tools from the stones. So they had a greater cranial capacity than the previous individuals that we have observed. They were known as tool makers or handyman. फॉसिल्स वेर फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका. इनके जो फॉसिल्स हैं वो ईस्ट अफ्रीका में मिले थे एंड दे हैव ऑलरेडी गॉट एक्सटिंक्ट अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो. सो नियरली 2 मिलियन ईयर्स अगो ये जो है वो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. दैट इज होमो हैबिलिस. इफ वी टॉक अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो हाइट है दैट इज 1.2 to 1.5 meters tall is the height of these organisms, and these individuals had a bipedal locomotion. They were able to walk with the two legs only. They were erect and the cranial capacity was 650 to 700 cubic centimeters. So they had a proper cranial capacity by which they could prepare different types of tools. They used the tools made from chipped stones. जो stones होते हैं पतले, उसमें से वो tools बनाते हैं. And they even had an habit of caring for their young ones. So that was about Homo habilis. मतलब Homo habilis जो organisms individuals थे, इनके characteristics थे. Next are Homo erectus. Homo erectus जो है वो 1.7 million years ago पहले appear हुए थे. So their existence started about 1.7 million years ago, and in them the males were appearing larger and stronger than the females. So the size of the males and females was different, and males appeared more stronger. They had an erect posture and they had protruding jaws. So their jaws were towards outside. They had small canines and large molar teeth. Teeth size उनका बड़ा था, so large molar teeth they had, and their cranial capacity was slightly more, 800 to 1300 cubic centimeter. That was their cranial capacity. That is functioning of the brain. Then the last one to come were the true men. In this, two of them are mentioned over here: Neanderthal men and Cro-Magnon men. निएंडरथल जो थे, they were fossils that were obtained from Germany. इनके fossils जर्मनी से मिले थे, जबकि क्रो-मैग्नन के fossils फ्रांस में से मिले थे. They walked upright just like us. They had a normal walk and the cranial capacity was also 1300 to 1600 cubic centimeter. तो इनकी जो cranial capacity है वो काफी ज्यादा है. It existed 0.5 million years ago. 0.5 million years पहले ये
क्या है, एग्जिस्ट हो रहे थे और एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अबाउट 30,000 ईयर्स अगो। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही रीसेंट है, 30,000 ईयर्स पहले तक ये निएंडरथल मेन जो है दे वर अलाइव, सो देयर फॉसिल्स आर आल्सो नॉट वेरी ओल्ड। They were cave dwellers and they lived even in the families, ये फैमिली में रहते थे। क्रो-मैग्नन मैन, इनके जो फॉसिल्स हैं वो फ्रांस से मिले हैं एंड दे हैव जस्ट इमर्ज्ड अबाउट 34,000 ईयर्स अगो। मतलब अभी ही रिसेंट कह सकते हैं कि इवन आफ्टर निएंडरथल मैन in the France the individuals which emerged they were known as Cro-Magnon men and 34,000 years पहले ये इमर्ज हुए हैं। recent ancestors of modern man, जो मॉडर्न मैन है उससे सबसे क्लोजेस्ट जो है दे आर द क्रो-मैग्नन मैन। तो दे अपीयर ऑल्सो लाइक द नॉर्मल मॉडर्न मैन ओनली विद ओनली स्लाइट वेरिएशंस इन देम। क्रेनियल कैपेसिटी वाज 1650 सीसी एंड दे लिव्ड विद फैमिलीज। ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अबाउट जस्ट 10,000 ईयर्स पहले, सिर्फ अभी 10,000 साल हुए हैं जब ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो इनके बाद जो आता है वो है होमो सेपियंस एंड होमो सेपियंस सेपियंस, जिन्हें हम कहते हैं मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो हमें पता ही है। तो सबसे पुराने थे ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, और फिर रामापिथेकस के बाद देयर वाज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, राइट। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। आफ्टर ऑस्ट्रेलोपिथेकस देयर वाज होमो हैबिलिस, देयर वाज होमो इरेक्टस, then came in the chain the Neanderthal men that were at different place, Cro-Magnon men, and then after the modern man. So in this way there was the evolution of man also. So here we complete this chapter. So it is very important that you understand all the concepts as being discussed in the videos rather than just reading it from your textbook, because it is very important for the purpose of NEET examination that you know all these concepts. You will be able to attend the MCQs from other reference books only if you understand it in this concept. Okay, so prepare it well and we'll begin with the next chapter there.